Hi guys, welcome back to my channel. So today I finally cleaned my room, and not just because it needed to be cleaned, but because I honestly needed this reset. My sister and niece were here for last 2 months and I wasn't posting for almost 3 weeks because I was just spending all my time with my family. I love my family so much, and now that they have gone back, the house feels really quiet and empty. They left yesterday, and honestly, it's been a mix of emotions. When I wake up this morning and I looked around my room, I had this weird feeling like I didn't want it to touch anything. It felt like if I cleaned it, it would mean that those beautiful days are really over. But I also knew I had to start somewhere. Life goes on, right? So, yeah, I cleaned not just the mess, but also a bit of what I have been feeling. My room was a bit chaotic. Well, okay, maybe more than a bit, but I did it. And in this video, I will take you through the little reset. So, let's clean together. How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is a game that we play. I won't get away. We can find a safe place Within our company, within our company, within our company. So come closer to me. Come a little closer. How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. So come a little closer.
personality. Sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy. Everything's peachy. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Personality. Sometimes sour, sometimes sweet. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. Improvise, improvise, improvise. I need a nice vacation and pure introspection, you know. There is nowhere else to go, so I'll be coming home to you. Your sadness doesn't compare to the happiness
एकदम छकाछक जैसा कि रहता है. And it feels better right now because obviously yesterday I was super emotional, and in the morning also, like after waking up, not seeing their face like my sister and my niece, it just feels so weird. आदत हो चुकी थी काइंड ऑफ लाइक 2 महीनों से. लाइक जब भी उठती थी मेरी छोटी सी नीस को ऐसे ना स्माइलिंग फेस देख के उठती थी, तो वो वहाँ थोड़ी सी ऐसा अजीब लग रहा था सुबह उठ के. पर मैंने सोचा कि अभी आई नीड टू buckle up and start cleaning my room. And my mom also forced me. My mom was very emotional yesterday, even in the morning, like super duper emotional, super duper. And it just like it is normal, you know what. After cleaning this room, it does feels empty and quiet, but also honest, it was really hard for me. I don't know how to explain, but it was really hard for me because मेरी दीदी के साथ मेरा जो बॉन्ड है वो कभी उतना अच्छे तरीके से बना ही नहीं था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी दीदी को अब्रॉड चले जाना पड़ा था, तो उस टाइप का थोड़ा सा बॉन्ड नहीं था. पर दिस 2 months में इतना अच्छा बॉन्ड हो चुका है कि मैं क्या ही बोलूँ. वी कांट You can't even imagine, but I really miss her. मुझे रोना नहीं था, पर I'm sorry guys. अजीब लग रहा है. I really do already. And जब मैं सुबह उठ के सब क्लीन करने बैठी ना, मैं क्लीन भी नहीं कर पा रही थी. मेरे को लग रहा था कि लाइक अजीब लग रहा था, लाइक थोड़ा सा लाइक बोलते ना वो ऑरा चला जा रहा था. लाइक अभी जब क्लीन हो चुका है ना, अभी वो जो ऑरा था ना दीदी का एंड मेरी नीस का, वो ऑरा पूरा चला गया. सो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं सुबह भी उठ के ऐसा क्लीन करने का मन नहीं हो रहा था. पर या मैंने कर दिया. जस्ट ना मैं तो रो रही थी, आप लोगों ने देखा ही होगा. सो अभी मैं उठ के गई थी क्योंकि फ़ोन बज रहा था, तो और मेरी दीदी ने कॉल किया था. तो या शी इज़ सेफली लैंडेड टू पोर्टुगल एंड शी इज़ राइट नाउ इन एयरपोर्ट एंड पिकिंग अप हर लगेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो या अब थोड़ी सी मैं खुश हूँ, थोड़ी सी स्माइल आ गई. मैं इसके बारे में बात कर रही थी और इसका कॉल आ गया. सो जो इट वॉज सो नाइस. एंड मैंने कभी भी कैमरे के सामने रोया नहीं, मतलब ये यूट्यूब वगैरह में. पर क्या करूँ, लाइक थोड़ा सा ऐसे बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था ना. अजीब लाइक कल ही थी, पूरा घर भरा हुआ था और आज पूरा लाइक एम्प्टी हो गया. सब जगह ऐसे शांत और ये सब कुछ थोड़ा सा लगता है ऐसा. लाइक सुबह वो रूम लग रहा है एक एम्प्टी सा रूम ही लग रहा है, जान खत्म हो चुकी है इस रूम की. पर हाँ, life keeps moving and cleaning this space is my kind of way of moving too. And if your space is messy too, start when you're ready, because I mean start whenever you feel like you need to start. Because मैं और एक चीज़ बोलूँगी कि ज़्यादा देर तक भी पुराने चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए. कभी कभार उन चीज़ों को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज मैं रूम को क्लीन नहीं करती तो मेरी नीस के खिलौने, मेरी दीदी के जो छोटे छोटे जो भी थे रूम में, ये सब कुछ मैं देखती और मुझे रोना आता और मुझे बुरा भी लगता. तो क्लीनिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट. समटाइम्स आपको आपके लाइफ से कुछ चीज़ों को निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो बहुत हर्ट करेंगे. तो हाँ, हर्ट करते हैं. टेक योर टाइम. पर कभी कभार जल्दी भी बहुत अच्छी चीज़ होती है. और मेरे लिए तो ये बहुत मैं ऐसी ही हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को ये कर देती हूँ. लाइक अभी मैं रूम क्लीन हो चुका है, मेरी दीदी ने मुझे कॉल किया, ओवरऑल एक अभी ठीक ठाक हो चुकी हूँ ना मैं. लाइक आई एम हैप्पी. बट वही
पूरे घर में वो चीज़ रहती तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता बार बार कि हाँ वो दो महीने थी, कितना अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, एंड आई रियली मिस दैट एंड आई विल मिस दैट, बट you should move on. And yeah, this is it for this video. I hope you guys like this video, and if you like this video, please do like, share, comment, subscribe my YouTube channel. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. I love you all so much. Stay positive and keep smiling.